Welcome to GK Mojo. In this Target Test 2021 series, part 2, we are going to solve some must-solve questions for TISSNET and TISSMAT. In this video, we are going to see the fastest way to solve train concept in examination. I'll give you some ratio concept to solve the standard template questions that do come historically in TISS. Let's get started. So first of all, I'll just get you acquainted with the concept of the trains, alright? The basic concept which you'll require to solve some questions. This is the conventional way. So let's suppose the length of the train is L1. This is the length of train, okay? Now, the first case is when a train crosses a tree, alright? Or a pole or a person. In this case, the overall distance while calculating the speed or time or whatever you want to calculate will always be L1 only. That is the length of the train. Alright. The second case is when they say in the question that a train crosses a platform, a bridge, or let's say another train, alright, that is train 2, okay, or a tunnel. And when the length of all of these entities that I have mentioned over here is L2. So in this case, the overall distance needed to calculate the speed or time will be L1 plus L2. Keep this in mind. Next thing is about the relative speed, right? So let's suppose one train T1 is moving in this direction and another train T2 is moving in this direction only, same direction. So here the speed is S1, here the speed is S2. And we know S1 is greater than S2. So since the direction is same, always remember your relative speed will be S1 minus S2. So vice versa, if train T1 is going in this direction and train T2 is going in this direction, that is the opposite direction. This is S1, this is S2. So in this case, relative speed will be S1 plus S2. The speeds will be added. Alright. Now we'll see a concept. Alright. We'll be using this concept to solve the questions. Alright. So let's suppose a train crosses a pole. Alright. This is a pole in, let's say, 10 seconds. Okay. And the same train crosses a platform in 20 seconds. 10 seconds, 20 seconds, right? So basically we know that this will be L1 because I told you at the start only, to cross a pole the distance is of the train itself, right? And over here it is the sum of the distance of the train, length of the train, as well as the length of the platform, right? L1 plus L2, right? So basically to cover this L1 it takes 10 seconds, and to cover this L1 plus L2 it takes 20 seconds. What do we imply from here, right? So this takes 10 seconds, overall takes 20 seconds. So how much time it would be taking to cross this L2? 10 seconds, right? This 20 seconds minus 10 seconds. So basically L2 is crossed in 10 seconds. So basically what is the ratio of the length of the platform and the train? It would be 1:1. So basically क्या इन्फर कर सकते हैं ये रेशो में से कि प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई एक है. ऑलराइट, इट इज़ 1:1. अगर 2:1 आएगा तो हम लोग इन्फर कर सकते हैं कि ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई के 2 गुनी है, राइट? सो इन दिस वे विल बी एबल टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस orally by just looking at the question. Alright, so let's get started with the questions. So the question says a 300-meter long express train crosses a platform in 54 seconds while it crosses a signal pole in 18 seconds. What is the length of the platform? Alright, so I've given you the method for this, but first I'll go with the conventional method. पहले conventional method करके दिखाता हूँ, ठीक है? फिर हमारा shortcut method लगाते, ठीक है? So conventional method में क्या होगा? Speed of train while crossing the pole will be equal to speed of train while crossing the platform, right? Speed तो एक ही रहेगा, प्लेटफॉर्म क्रॉस करो या पोल क्रॉस करो, क्योंकि ट्रेन एक ही है, राइट? सो पोल क्रॉस करते वक्त स्पीड क्या रहेगा? ऑलराइट, क्या दिया है? 18 सेकेंड्स में क्रॉस करता है, राइट? और लेंथ का ट्रेन का लेंथ क्या है? 300. सो 300 अपॉन 18, राइट? वही प्लेटफॉर्म का अगर स्पीड निकालने जाए तो कैसे फॉर्मूला क्रिएट होगा ये?
हमें ये लेंथ नहीं पता है, ऑलराइट। ये लेंथ होगा लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, दैट इज़ 300, राइट। एंड इट टेक्स 54 सेकेंड्स, राइट। सो इसको 54 इधर लिख लेते हैं। 18 वन सा 18 थ्री ज़ा, ये 3 यहाँ पे जाएगा तो 900 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस 300, हेंस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म विल बी 600, राइट। सो ये फार्मूला मेथड है, राइट। बेसिकली ऐसे सब क्वेश्चंस करने का फार्मूला मेथड है, बट हम इजी मेथड यूज़ करेंगे, ऑलराइट। इजी मेथड क्या है, हमें पता है कि प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लेता है, वो 54 सेकेंड्स लेता है, राइट। और प्लेटफॉर्म की लेंथ, प्लेटफॉर्म क्रॉस करते वक्त डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, दैट इज़ L1 प्लस L2, राइट। अभी ये जो L1 है ये लेंथ ऑफ ट्रेन है, ऑलराइट, और ये प्लेटफॉर्म का लेंथ है। तो ये लेंथ ऑफ ट्रेन ये पोल क्रॉस करने में 18 सेकेंड्स लेता है। सो बेसिकली इसका वैल्यू 18 सेकेंड्स है, राइट, प्लस L2, राइट। सो बेसिकली ये क्रॉस करने के लिए कितना लेगा, ये क्रॉस करने के लिए 36 लेगा, 54 माइनस 18, राइट। सो बेसिकली अगर देखने जाए तो इसका रेशो है 1:2, राइट। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि 18 सेकेंड्स में 300 मीटर्स क्रॉस करती है ट्रेन, तो 36 सेकेंड्स में कितना क्रॉस करेगी, 600, राइट। सिंपल, ये रेशो भी लेने की ज़रूरत नहीं है थी यहाँ पे, बिकॉज सीधा साधा आई मीन नंबर्स आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ओवर हियर। सो 18 seconds it crosses 300 meters, so 36 seconds it will cross 600 meters. Correct answer is option A, right? So you'll see that this is a method that you can do orally also. Now the next question is, Rajdhani Express of 250 meter long passes a platform of 350 meters in 50 seconds. What time will this train take to pass a platform of 230 meters length? तो पहले एक प्लेटफॉर्म जो 350 मीटर्स लेंथ का है उसको वो 50 सेकेंड्स में क्रॉस करती है। अभी उन्होंने पूछा है 230 का कितने में करेगी, राइट। सो बेसिकली टोटल डिस्टेंस क्या होगा, पहले बात तो 250 प्लस 350, दैट इज़ लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पहले केस में, राइट। सो 250 प्लस 350 कितना होता है, 600 मीटर्स। ये कितने टाइम में क्रॉस करती है, 50 सेकेंड्स में। अभी सेकेंड केस में 230 मीटर्स का प्लेटफॉर्म कितने में क्रॉस करेगी पूछ रहा है। सो बेसिकली अभी लेंथ टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 250 प्लस 230 मतलब 480 मीटर्स कितने टाइम में क्रॉस करेगी पूछ रहा है, राइट। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, व्हाट यूल गेट इज x seconds इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 600 into 480, alright. Solve this, you'll get 6 1s are 6 8s are, so 5 8s is 40, right. So basically the train, this Rajdhani train of 250 meter long will cross a platform of 230 meter in 40 seconds. Option B is your correct choice. So that's all in this video. Please visit us at gkmojo.com. Thank you.